Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kids Planet with Urwa, where we think together, explore the universe, and most of all, enjoy learning. हम साइंस वर्ल्ड के टेल ऑफ द यूनिवर्स पे से and today we will be starting the second topic of Unit 1, which is heliocentric model of the universe. The first question to arise is what is a heliocentric model of the universe? इसका जवाब यह है कि कोई भी ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल जहाँ पे सन कंसिडर किया जाए एज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स उसको टर्म किया जाएगा द हेलियोसेंट्रिक मॉडल। इन मॉडल्स में ये बिलीव किया जाता है कि जो अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करें अराउंड द सन। The idea of the heliocentric model was introduced by Aristarchus of Samos. Before moving on, I would like to explain the illustration over here. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ये एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल है एंड ओवर हियर यू सी द सन इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स रादर देन द अर्थ। जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है जस्ट लाइक द जियोसेंट्रिक मॉडल इसमें द आउटमॉस्फेयर ऑफ फिक्स्ड स्टार्स परसिस्ट कर रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन। So now we'll be learning about the Copernican model. You see, in 1514, scientist Nicolaus Copernicus ने formulate किया his new proper cosmological model of the universe. इस मॉडल में he placed the sun rather than the earth at its center. इस मॉडल के मुताबिक जो सन था वो स्टेशनरी था एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और जो अर्थ और सारे बाकी प्लैनेट्स थे वो मूव कर रहे थे इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। ये जो मॉडल था इट वाज अ बिग चैलेंज इन रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्योंकि जो कैथोलिक चर्च था वो कभी भी अग्री नहीं कर सकते थे टू कॉम्प्रोमाइज द सुपीरियरिटी ऑफ अर्थ बाय लूजिंग इट्स सेंट्रल पोजीशन इन द होल यूनिवर्स। इस वजह से नियरली एक सेंचुरी पास हो गई बिफोर दिस आइडिया वाज टेकन सीरियसली। कॉपरनिकस की जो प्रेडिक्शंस थी वो लेटर टेस्ट हुई और रिफाइन हुई बाय अदर एस्ट्रोनॉमर्स। टाइको ब्राहे के जो रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने अलाउ किया फॉर मोर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस जो कि फिर यूज की मैथमेटिशियन जोहानस केपलर ने टू थियराइज हिज लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लेकिन जो सबसे ग्रेटेस्ट सपोर्टर थे ऑफ द कॉपरनिकन हेलियोसेंट्रिक व्यू वो गैलीलियो गैलीली थे। Below are you see these are two pictures. The first illustration ये जो है एक picture of the scientist Copernicus. The other one is you see ये demonstrate करिए the difference between the Copernican and Ptolemaic model. जो difference है वो ये है कि in the Ptolemaic model, as you can see, Earth is in the center of the universe, but in the Copernican model, the Sun is in the center of the universe. Now let's move on. अब हम गैलीलियो गैलीली एंड केपलर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। 1609 में साइंटिस्ट गैलीलियो ने स्टार्ट किया टू ऑब्जर्व द नाइट स्काई विद अ टेलीस्कोप जो कि रिसेंटली इन्वेंट हुई थी। जब उन्होंने प्लैनेट जुपिटर को ऑब्जर्व किया तो गैलीलियो को पता चला कि इट वाज अकम्पनीड बाय सेवरल स्मॉल सैटेलाइट्स। वो सेवरल स्मॉल सैटेलाइट्स बेसिकली क्या थे? द मून्स दैट ऑर्बिटेड इट। इस बात से उन्होंने ये इम्प्लाई किया कि दैट एवरीथिंग डिड नॉट हैव टू ऑर्बिट डायरेक्टली अराउंड द अर्थ जैसे कि एरिस्टोटल और प्टोलेमी ने सोचा था। Although ये भी of course possible था to believe that the earth was stationary at the center of the universe और जो moons of Jupiter थे वो इस तरह के बहुत ही किसी complicated path में move कर रहे थे around the earth जिससे ये appearance आ रही थी कि वो orbit करें Jupiter को। लेकिन जो Copernican model था वो इस concept को बहुत simply explain कर रहा था। At the same time, Johannes Kepler ने modify कर ली Copernicus's theory, suggesting कि जो planets थे वो elliptical orbits में move कर रहे थे, not in circular orbits. जो फिर final predictions थी वो match करी थी observations and successfully answer कर लिया कि why the size of the moon varies. अच्छा, इस बात को मैं थोड़ा सा explain करना चाहूँगी कि हमने पहले भी discuss किया था कि ये Ptolemy के लिए एक प्रॉब्लम था टू एक्सप्लेन कि व्हाई द मून वाज समहाउ ट्वाइस एज बिग एट टाइम्स देन अदर टाइम्स। तो जो फिर
केपलर ने कहा कि सिंस देयर आर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, तो उसमें ये हुआ कि इलिप्टिकल ऑर्बिट इज लाइक दिस. तो if the earth is there and this is the elliptical orbit of the moon, so if the moon is over here it will be closer, but if it will be on this path, the farther part of the ellipse, इसलिए वो ज़्यादा पे छोटा नजर आएगा. So let's move on. September 1610 में जो है गैलीलियो ने स्टार्ट किया टू ऑब्जर्व वीनस, और उसने नोटिस किया कि वीनस भी एग्जिबिट कर रहा है अ सेट ऑफ फेसेस एंड दे वर एक्चुअली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द मून. जो कोpernican मॉडल था वो प्रिडिक्ट कर रहा था ऑल दोज फेसेस एंड द कोpernican मॉडल सेड दैट दीज फेसेस वुड बी विजिबल. लेकिन जो पटोलमिक मॉडल था इस तरह की कोई चीज पॉसिबल नहीं थी उसमें. Galileo के telescopic observations of the crescent and the full phases of the moon, इन observations की वजह से the Ptolemaic model became history, क्योंकि जो many astronomers थे they started believing in the heliocentric model of the universe. Although जो Copernicus का model था it got rid of circular spheres by the virtue of Kepler's laws of planetary motion, लेकिन जो idea of fixed stars था वो still persist कर रहा था. These are some images. First is of the scientist Galileo Galilei. The other is of the phases of Venus. It explains कि आखिर Venus के phases क्यों appear होते हैं. जो ये वाली picture है, it is the picture of the scientist Johannes Kepler. So this will be all for today. That's all for today. Thank you.